हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। और आज एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके लिए, एक वो एंट्रेंस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन लेकर जिस यूनिवर्सिटी को आप 100% एज अ बैकअप ऑप्शन या अपनी यूनिवर्सिटी लिस्ट में टारगेट कर सकते हो इफ यू आर समबडी हु डिड नॉट crack CLAT or ALET examination, right? So yes, I will be talking about today NMMIS LAT, which is the Narsi Munji Institute of Management Studies का law admission test। इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आज बात करने वाली हूँ। सब कुछ बताऊंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, क्या क्या सीट्स अवेलेबल हैं, everything we are going to discuss in this one particular video. All you have to do is stay tuned till the end of the video. कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला है, कोई भी डाउट आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बट आई एम डैम श्योर कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा फॉर एटलीस्ट दिस वन पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट? सो द नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज conducts the NMIMS Law Aptitude Test every year in the different slots। ठीक है, अलग अलग स्लॉट्स में आपका ये एग्जाम होता है, डिफरेंट स्लॉट्स में, राइट? यू कैन चूज द स्लॉट्स एज पर योर कन्वीनियंस, राइट? This law entrance exam is a national level entrance examination, that is any candidate from any part of India can apply for this law entrance exam to be admitted to one of the prestigious law colleges. The NMMIS Law Aptitude Test is conducted to help students gain admission to various undergraduate law programs, BLLB Honors and BBLLB Honors. So आपको ये entrance test देके BLLB और BBLLB Honors के program में admission मिलता है. Now the campuses who are offering the law programs: Mumbai campus, Navi Mumbai campus, Bangalore campus, Hyderabad campus, Indore campus and Chandigarh campus, ये सारी branches जो हैं नारसी मुंजी की आपको law programs provide करती हैं, right? Now let's see the eligibility criteria, right? The student should have passed 10+2, that means you should have passed class 12th with an aggregate of 50%. The students in the class 12th can also apply for this law aptitude test. Such students are required to submit their documents and mark sheet and for the qualifying examination at the time of admission, right? तो appearing candidates भी इस particular entrance examination में appear हो सकते हैं. Appearing candidates can also apply. 10+2 में अगर आप appear होने वाले हो. Candidates belonging to India only can apply for this NMIMS Law Aptitude Test. Only Indian citizens can apply for this law aptitude test. There is an upper age limit for the students to apply for this law entrance test. Any student whose age is more than 23 years is not eligible to apply for this law entrance exam for admission to the BLLB and BBLLB programs. ठीक है, अगर आप 23 years से ज्यादा हो तो आप इस entrance examination को नहीं दे सकते हो. Only candidates who are less than or equal to 23 years can appear for this law aptitude test, right? Let's see the exam overview. नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, एग्जाम का नाम है NMIMS LAT. कंडक्टिंग बॉडी नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन once a year but in different slots, right? Different slots. नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इंग्लिश में होता है, एप्लीकेशन ऑनलाइन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन में ही एग्जाम होता है आपका. एप्लीकेशन फीस ₹2000, participating colleges 1, exam duration is 2 hours, same like CLAT, 2 hours of you to appear for this examination. Let's see the exam pattern. There are an objective type question examination. The NMIMS Law Aptitude Test consists of 150 multiple choice questions. 120 minutes में आपको solve करने हैं 150 questions. 150 questions. There are 150 multiple choice questions are divided into 5 sections: verbal reasoning, current affairs including general knowledge, logical reasoning, legal reasoning and quantitative reasoning. Same as CLAT. The syllabus is same as CLAT, but the question number is different. There are more questions than CLAT, which is there are 150 questions in this one particular entrance test, right? Let's see the number of questions allotted to each section. So section wise weightage देखते हैं. Every section is divided equally. No highest weighted section, no lowest weighted section. Every section is divided equally. 30 marks each section, 150 questions, right? Verbal reasoning, current affairs, quants, logical, legal. Every
section is divided equally. You have to solve 150 questions in 120 minutes. In a span of 2 hours, you have to solve the 150 questions, right? अब अगर हम थोड़ा सा सब टॉपिक्स के बारे में बात करें, हर सेक्शन के, हर सब्जेक्ट के सब सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. इंग्लिश में आपसे वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, प्रोफिशिएंसी, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश यूसेज एरर्स, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन विद अ मिनिमम ऑफ 2 passages followed by 5 to 10 questions. That is the English syllabus, right? Basic क्लास 12th तक की आपकी जो इंग्लिश होती है वो आपसे पूछी जाती है. एंड दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक क्लास 12th की इंग्लिश अगर आपसे पूछी जा रही है, द स्टैंडर्ड इज समथिंग दैट इज रेज्ड. तो आप ये मत सोचना कि आपने 12th तक अगर इंग्लिश पढ़ ली है तो आपका उससे काम हो जाएगा. There is a bit of the standard which is raised when in this particular examination English language is being asked, right? Next, if we talk about the general knowledge section, then the syllabus is history, geography, general science, economics, civics and current affairs of past 1 year, same like CLAT, right? Same like CLAT जो आपसे सिलेबस पूछा जाता है जीके करंट अफेयर्स का, सेम सिलेबस है in this particular entrance examination. Quantitative reasoning, again the same syllabus, profit loss, speed time distance, algebra, average, permutation combination, Venn diagrams, geometry, probability, triangles, percentage, number system, geometry, trigonometry, all these topics which is the basic elementary maths what you have studied till class 10th, वो सिलेबस आपसे पूछा जाता है in the quantitative reasoning of this one particular entrance test. Now if we move to the logical reasoning section, logical reasoning, identify patterns, logical links and rectify logical arguments, wide analogies, competing arguments, drawing well supported conclusions, reasoning by analogy, applying principles or rules, understand the structure, relationship and draw logical conclusions around the structure, and also includes reasoning deductively from a set of statements and rules, things or events. So आप देखो क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है. क्रिटिकल रीजनिंग इज मोर देन एनालिटिकल रीजनिंग. तो क्रिटिकल रीजनिंग अगेन प्रॉपर क्लैट वाला जो पैटर्न है वो ये फॉलो कर रहे हैं, राइट? क्रिटिकल रीजनिंग इज मोर देन एनालिटिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बट ज्यादा क्वेश्चंस आपसे क्रिटिकल रीजनिंग के ही पूछे जाएंगे इन दिस वन पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लीगल रीजनिंग सेक्शन, स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लीगल प्रोपोजिशन, सेट ऑफ फैक्ट्स, केस लॉज, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, सेम लाइक क्लैट, प्रिंसिपल फैक्ट सिचुएशंस आपसे लीगल में पूछी जाएगी. ऑल सेक्शंस कैरी इक्वल वेटेज, 30 मार्क्स ईच, right? Now let's talk about the application procedure, right? Visit the official website of the Narsi Munji Institute of Management Studies, that is http://nmims/in, right? Click on the link, apply online to fill out the application form. Enter your name, date of birth, email ID, father's name, mother's name, permanent address, education qualification and mobile number. Enter the captcha and link on the submit button. You will get your login details. Log in again and use the login credentials you received during the first registration step, right? आपका यहाँ पे registration complete हो जाएगा, उसके बाद आपको एक आपके login credentials मिल जाएंगे. उस login credentials से आपको दोबारा login करना है, right? That first time आपको जो login details मिले उनको fill करके आपको दोबारा login करना है, right? The candidates needs to now upload the following documents in the application form. जब आप दोबारा login करोगे तो आपको ये documents में अब fill out करना है. 2 passport size photographs of the candidate are required. Scanned image of their signature with a blank ink pen or on white paper. Black pen से आपको white paper पे, black pen से white paper पे signatures करके आपको upload करना है. The table shows the documents required. Photograph size 20 KB to 50 KB, 200 to 230 pixels, JPG or JPEG format. Signatures 10 KB to 20 KB, 114 to 60 pixels, JPG or JPEG format again. At last, make the payment of the application form and submit it. Before submitting, check each and every detail. Again, I'm telling you, you have to check all the details that you fill in the application form, because the changes would not be allowed afterwards. If you say that I want to make this or this change, that will not be allowed, right? So this is the fees. The fees remains everyone's is same, right? The 2000 rupees for every category, the fees remains the same. General category, SC, ST, OBC, the mode is online.
whether any gender, irrespective of any gender, irrespective of any category, the fees remains the same, which is the 2000 rupees you will have to submit for you to complete the application form, right? Now the selection and admission procedure, merit list based on MMIS LH score, counseling and document verification, campus program allotment, confirmation of admission. ठीक है, तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी उससे आपको पता चलेगा कि आपने परफॉर्म कैसा किया है, and on that basis only you will be granted the campus. There are various campus of Narsee Monjee. Then after that, when the campus has been allotted, you will get your admission letter, right? So this is the application procedure. Now, why should you choose MMIS School of Law? Strong academic reputation, industry-oriented curriculum, internships and moot court exposure, modern infrastructure and faculty. Everything is good. It is one of the good universities that you can target if you couldn't crack CLAT or AILET, right? This can be one of your options if you are ready to pursue law as your career, right? So this was everything about the Narsee Monjee Institute of Management Studies ka law entrance examination. Now, if you're somebody who has any doubts related to this one particular test or any other test in general, do let us know in the comment section. We'll be happy to help you out. Till then, all the very best for your preparation, and I'll see you in the next one. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जहां पर हम आपको अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं, आपको सारे ऑप्शंस आपके क्लियर करने वाले हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज यू डू नॉट हैव टू forget to subscribe to our Law Prep Tutorial YouTube channel. Till then, bye bye. I'll see you in the next one.